if length of a cylinder, if length of cylinder on heating increases by 2%, the area of its base will increase by देखो जल्दी से, if the length of the cylinder on heating increases by 2%, then the area of its base will increase by how much? लेंथ कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 2%. तो फॉर्मूला क्या है अपने पास? डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ ना बेटा? तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 2%. यानी डेल्टा एल बाई एल नॉट की वैल्यू कितनी है? 2% दे रखा है. सो 2% इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी. 2% मतलब कितना बेटा? 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी. और पूछा क्या प्रॉब्लम में? एरिया. अब एरिया का तो फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, कैसे लिखोगे बेटा? चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू ओरिजिनल एरिया इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ योर एरियल एक्सपेंशन इंटू डेल्टा टी. तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू बीटा इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ ना? बीटा कितना बराबर होता है बेटा? बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है. ठीक है, तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी. अल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है. ये वैल्यू यहाँ पर डाल दो तो उसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 बाई 100. तो ये हो गया 4 बाई 100, यानी कितना आया? 4%. ठीक है ना? इज इट क्लियर? सर डेल्टा कैसा आया? क्या डेल्टा बेटा? ये तो टेम्परेचर डिफरेंस है ना बेटा फॉर्मूला का. चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस. डेल्टा ए मतलब क्या? चेंज इन एरिया ना बेटा. दिस इज अ फॉर्मूला. बीटा इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई a1 इंटू डेल्टा टी लिखाया था ना मैं. तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा टी लिख रहा हूँ मैं. तो डेल्टा ए इज इक्वल टू हाउ मच वर्मी? ए नॉट इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी. आई बात समझ में? सर देन बेटा सर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वॉल्यूम of a metal sphere increases by 0.15% when its temperature is raised by 24 degrees centigrade. The coefficient of linear expansion of metal is. क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो. The volume of a metal sphere increases by 0.15%, यानी डेल्टा V. डेल्टा V is 0.15%.
when its temperature is raised by yani delta T is equals to 24 degrees centigrade. Coefficient of linear expansion of material yani alpha is equals to, how much पूछ रहा 0.15% मतलब कितना आएगा बेटा, that is 0.15 divided by 100 यानी that will be 0.0015, isn't it? 0.0015 of your initial value, यानी परसेंटेज में लिख लो, कुछ तो करना नहीं है बेसिकली, ठीक है. The volume of a metal sphere increases by 0.15% of its initial volume, isn't it? यानी this value will become for me, यहाँ पर लिख रहा हूँ, that value will become for me 0.0015 times of your V, original value. Okay. वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा, 0.006%. क्या बोले? डेल्टा V by V 0.006% आएगा. 0.006% आ रहा. Sir, 2 into 10 to the power of -5 वाला सर. हाँ 0.0, तो गामा इज इक्वल्स टू कितना बेटा? गामा इज डेल्टा V by V इंटू योर डेल्टा T. तो डेल्टा V कैसे लिखता हूँ मैं? V इंटू गामा इंटू डेल्टा T. डेल्टा V कितना दे रखा है? 0.0015 टाइम्स ऑफ V, दैट इज इक्वल्स टू V. गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इज 24. तो ये V और ये V चले गए यहाँ पर से, ठीक है नहीं? तो गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हो बेसिकली. पहले गामा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसके बाद अल्फा में डाल लेता हूँ, दैट विल बी मोर बेटर फॉर मी. तो यहाँ पर हो गया मेरे पास ये गामा. तो गामा वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.0015 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है. हाँ 3 से डिवाइड कर ले सकते हो प्रॉफिट. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 15 यानी 6.25 हो जाएगा. 6.25 into 10 power minus 5. So this is your alpha, sorry, gamma. So gamma is equals to 3 times of alpha. So alpha is equals to gamma divided by 3. यानी 6.25 into 10 to the power of minus 5 divided by 3 कर दो. तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 6.25 को मैं 6 ले रहा हूँ, 3 2 जा यानी 2 into 10 power minus 5. आ गई बात? क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? Yes sir. चलो कितना चार नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉल डाउन बात करो. हाँ जी कर लो. म्यूट हो जाओ बेटा. Next question. A metal rod has a length of 1 meter at 30 degrees centigrade. Alpha of your metal is equals to 2.5 into 10 power minus 5 per degree centigrade.
the temperature at which it will be shortened, by 1 mm is metal rod has a length of कितना बेटा 1 मीटर। एक मेरे पास एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ है मेरे पास 1 मीटर। एट व्हाट टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। अल्फा ऑफ मेटल दे रखा है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5। द टेम्परेचर एट विच यानी T2 इज इक्वल्स टू हाउ मच which will be shortened by 1 mm, which is shortened by your 1 mm यानी डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना शॉर्टेंड मतलब कितना माइनस ऑफ 1 mm यानी 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, दैट इज माइनस ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है बेटा, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। That means that is your delta L divided by L into T2 minus of T1। ठीक है, तो अपन को निकालना क्या है, T2 minus T1 में T2 निकालना है, तो T2 बाहर निकालो, T2 minus T1 is equals to ये हो गया डेल्टा L divided by L into your alpha। तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस ऑफ 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कितना है मेरे पास 1 मीटर इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5, इजंट इट। तो ये हो गया T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 30 इज इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा बेटा 10 पावर माइनस 3, दिस वन इज डिवाइडेड बाई, इसको अगर मैं 25 में लिख लूँ 25 इंटू 10 पावर माइनस 6 है कि नहीं, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 25। तो T2 माइनस T1 कितना आ रहा है, T2 माइनस ऑफ योर 30 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 6 कितना आ जाएगा 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 25। 1 बाई 25 मतलब कितना बेटा 1 डिवाइडेड बाई 25 कितना 0.04 इंटू 10 पावर 3 है कि नहीं। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 40 सर, माइनस 40 प्लस 30। सो T2 माइनस ऑफ 30, ये माइनस है ना यहाँ पर, तो T2 कितना बनेगा बेटा माइनस 40 प्लस 30, तो कितना हुआ कितना हुआ फिर एक्सपेंड कैसा माइनस 10 क्या बोले माइनस ये माइनस, हाँ माइनस 10 डिग्री से आया सभी को, क्लियर है। और माइनस 40 कौन सा है वो अरे डेल्टा एल यहाँ 40 शॉर्टेंड है ना बेटा, डेल्टा एल कितना बोला शॉर्टेंड बोला है ना, तो डेल्टा एल क्या लोगे आप माइनस में लोगे ना, तो यहाँ पर हर जगह माइनस ही है ना, यहाँ पर भी माइनस है, 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 ठीक है। सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो यहाँ तक क्लियर आना सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Distance between
two places is 200 kilometers. Alpha of your steel is equals to 12 into 10 power minus 6 per degree centigrade. Total space that must be left between steel rails to allow for a change of temperature from 36 degree Fahrenheit to 117 degree Fahrenheit is डिस्टेंस बिटवीन योर टू प्लेसेस यानी दो रॉड्स के बीच में की डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर्स बहुत ज्यादा है ओके अल्फा ऑफ स्टील दे रखा है total space that must be left between these two steel rails to allow for a change of temperature from 36 degree Fahrenheit to 111 degree Fahrenheit. बोलो डेल्टा एल पूछ रहा अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी तो दोनों का लेंथ विल बी द सेम ना बेटा सर वो 117 फ़ारेनहाइट है ना हाँ 117 फॉरेनहीट 117 फ़ारेनहाइट में ना क्या बोले थिंग सर distance between the two places is 200 kilometers तो अल्फा ऑफ स्टील दे रखा है मेरे पास and is asking that the total space that must be left between the two rails यानी delta L must be equal to how much .86 into 10 to the power minus 9 194 आ रहा है इसी को 12 into आ रहा है Sir, 0.1 kilometer. 0.1 kilometer ओके पहले इसको कन्वर्शन कर लेते हैं बेटा अल्फा डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा अपने को फॉरेनहीट में होना है तो आई कैन राइट दिस वन एज 12 into 10 power minus 6 डिवाइडेड बाय फॉरेनहीट में मतलब 9/5 लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू ये एक्सपेंशन निकालना अपने को डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ये कितना है 200 इजंट इट इनटू ये कितना और एक टेम्परेचर मेरे पास 17 डिग्री फॉरेनहीट मतलब कितना आएगा बेटा 81 ओके तो 12 ऊपर चले जाएगा 12 into 5 कितना 60 into 10 power minus 6 divided by 9 that is equals to delta L divided by 200 initial length okay into your 81 ठीक है सर अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस सेंटीग्रेड में निकाले तो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना सर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना बेटा यहाँ पर तो कन्वर्शन कर लेना 36 से लेके 117 तक है ठीक है तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा देखो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 60 into 10 power minus 6 into ये हो जाएगा 200 9 1 जा 9 9 जा 81 तो यहाँ पर हो जाएगा 9 तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू योर 6 1 जा 6 2 जा 12 12 into 9 12 9 जा कितना बेटा 108.
108 into 10 power minus 3. तो किलोमीटर्स में लिखना है इसको, तो ये कितना बन जाएगा 0.108 किलोमीटर। तो एक्सपेंशन इसमें कितना होगा 0.108 किलोमीटर। वेरी गुड, हाँ बेटा। सर 194 मीटर होता है कन्वर्ट करें। हाँ सर अगर हम डिफरेंस सेंटीग्रेड में भी निकाले तो difference रहेगा ना सर? आवाज कट हो रही बेटा। दोनों ना बोल रहे सेंटीग्रेड में निकाले या फ़ारेनहीट में निकाले, दोनों में सेम ही चाहते हैं फाइल। केल्विन में सेम होती है बेटा, फॉरेनहीट में थोड़ी सेम होती है। फॉरेनहीट और आंसर सर केल्विन, आंसर सेम आता ना। हाँ बेटा, लेकिन फॉरेनहीट में वैल्यू आपको एक आएगी, फिर सेल्सियस में एक आएगी। आपको आंसर सेम कब आएगा? अगर आपको सेल्सियस और केल्विन में रहे तो सेम आता। डिफरेंट स्केल से ना बेटा, सेल्सियस पे 100 डिवीजन है और फॉरेनहीट पे 180 डिवीजन है, सेम कैसा आएगा? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटालिक सॉलिड स्फीयर is rotating about its diameter as axis of rotation. If temperature is increased by 200 degrees centigrade, okay, the percentage increase in its moment of inertia is dash. Alpha of metal is given as 10 power minus 5 per degree centigrade. सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, किसी को याद है? पर सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 m into r square. For hollow sphere मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा? 2/3 m into r square. ठीक है, so we got a metallic solid sphere which is rotating about its diameter. Okay, this is your solid sphere, ये इसका एक्सिस है, पूरे डायमीटर पे रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 200, यानी T1 होना चाहिए कितना आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 हुआ कितना 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर डिफरेंस इज बीन इंक्रीज। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, प्रॉब्लम है उसने, सॉरी। सो इट इज बीन इंक्रीज्ड बाय, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला वी नो बेटा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला? डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल्स टू 2 times of your delta L divided by your L, isn't it? That means for very small changes I can write di divided by your I
परसेंटेज में लिख रहा हूं तो इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, so this will be equal to how much beta? Delta L by L is alpha into delta T. अभी derive किया हम लोग ने, isn't it? So percentage increase in moment of inertia will be equal to how much for me? 2 into di by I बेटा, ये लिखे ना अभी से पहले हम लोग, यहाँ पर अभी करा ना, यहाँ पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन किया था मैंने यहाँ पर अभी, यहाँ पर देखो डेल्टा I by I is equals to 2 alpha into delta T. यस सर। Isn't it? यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सो स्मॉल चेंज के लिए, वेरी स्मॉल चेंज के लिए डिफरेंशिएशन लिखते हैं हम लोग। सो इट इज di डिवाइडेड बाय I into 100 is equals to 2 into alpha into delta T into your 100. अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 10 पावर -5। टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है 200 into 100, तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 into 10 power -5 into 2 into 10 to the power of 4. A4 यहाँ पर 1 चले गया, 2 2s of 4, 4 by 10. That will be equal to 0.4%. आई बात समझ में? सर थोड़ा नीचे करिए। The metallic solid sphere is rotating about its diameter above as an axis of rotation. If the temperature is increased by 200 degrees centigrade, the percentage increase in its moment of inertia is how much? ठीक है? क्लियर बेटा? सर थोड़ा ऊपर करिए। सर आप नोट्स भेज रहे हैं ग्रुप में? हाँ नोट्स भेज रहा हूँ। ठीक है? ओके चलो, टेक केयर बेटा, बाय। सर मंडे ऑफिस फिर मंडे ही। ओके सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह बेटा, बाय।